जापान में गूंजा जय भवानी जय शिवराय का आवाज। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूं कि यहाँ जापान में आकर हमारी इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत का मुलाकात करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आप लोगों ने जापान में भारत का नाम ऊंचा किया है। आज हम जब जापान के लोगों से, यहाँ के बिजनेसेस से बातचीत करते हैं तो इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात करते हुए वे बहुत ही आदर के साथ बात करते हैं। सो दिस इज अ प्लेस विच यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ इन जापान। और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस देश के लोग जिस देश में बसते हो वहां पर अपने देश का नाम वो रोशन करे और अपने लिए एक आदर की भावना भी तैयार करे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि मैं एयरपोर्ट पर आया और एयरपोर्ट पर आने के बाद हमारी टोक्यो में बसने वाली जो मराठी कम्युनिटी है उन्होंने मेरा स्वागत किया आणि पूर्णपणे मराठमोळं स्वागत। मला कधीच वाटलं नव्हतं की टोकियोमध्ये आल्यानंतर मला जय भवानी जय शिवाजी ऐकायला मिळेल। जय महाराष्ट्र। आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी खरोखर मराठी कम्युनिटीचे सर्वांचे फार मनापासून आभार मानतो की तुम्ही ज्या प्रकारचं स्वागत केलं ते खरोखर मनाला भिडणारं अशा प्रकारचं स्वागत होतं। मैं ये मानता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान और भारत के संबंधों को एक नई ऊंचाई दी और जिस समय प्रधानमंत्री आबे-सान जापान की कमान संभाल रहे थे उस समय से जो सिलसिला जारी हुआ, आज प्रधानमंत्री किशिदा-सान के साथ भी उसी प्रकार के संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संजोया है और इसका एक बहुत बड़ा लाभ आज भारत को हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें महाराष्ट्र भी बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुआ है। अगर हम लोग आज देखें तो महाराष्ट्र हैज ऑलवेज बीन अ पावर हाउस ऑफ इंडिया। All of us know that Maharashtra accounts for 15% of the national GDP, more than 15% of the manufacturing that happens in India. It accounts for more than 20% of Indian exports. It accounts for 28% of FDI that comes to India. And I was just talking to NTT, who are the biggest investors in data center. And they have provided me with the information that now Maharashtra is also data center capital of India, because the data center capacity which is created in India, out of that capacity 65% capacity is created in and around Mumbai and New Mumbai. So Maharashtra is new data center capital of India. I must also tell you that
Maharashtra is startup capital of India. I would like to apologize to Bangalore and Hyderabad. They are the great cities and they have done good in the startup ecosystem. But the facts and numbers say that out of 90,000 registered startups in India, 16,000 startups are registered in Maharashtra. They are actually they are doing their business in Maharashtra, and that is the highest number any city or state has. So it is startup capital, and out of 100 unicorns which are present in India, 25 unicorns are from Maharashtra. So Maharashtra has created a great ecosystem for startup, for business, and with the renewed interest of Japan into India after Prime Minister Modi ji took over, Maharashtra has been one of the biggest beneficiary, because one can really see that all the iconic projects in and around Mumbai are being supported by JICA, which is part of the Japan government. 40 kilometers underground metro, which is perhaps the longest single line in Asia, is being built, and hopefully by end of this year a part of it will be open for people, and by July next year the entire line will be open for people, and that will transform Mumbai, because it will actually carry around 17 lakh passengers every day. So that will be one of the biggest metro line ever built in India and also in Asia. Again, second iconic project, which with the help of JICA and with the help of Japan we are completing by end of this year, that is the Trans Harbour Link. It is a link from Shivdi to Nhava Sheva, from Mumbai to New Mumbai. It's a 22 kilometer sea bridge, which is the longest sea bridge ever built in India, and that will transform the entire economy and ecosystem, because all of us know that Mumbai, although is a financial, commercial and entertainment capital of India, but it is a landlocked city. It is an island. It has no space to expand. But now with this bridge, Mumbai will be connected to hinterland. Within 20 minutes, the entire New Mumbai will be approachable, and now we will be creating third Mumbai near New Mumbai, which will be bigger than Mumbai, and it will be a future city of India with the entire ecosystem of IT and AI. So I think the next destination for Industry 4.0, the next destination for future ready industries is the New Mumbai, or the city which we are creating. Also, as rightly mentioned by the Honorable Ambassador, the Shinkansen, or the fast train, high speed train, that is also being built between Ahmedabad and Mumbai, which is supported by the government of Japan and JICA, and hopefully it will be completed by 2028. In fact, today when we met the people from Shinkansen and also the Vice Minister, we have urged them that now all the challenges are met and the construction work is going on. So can we prepone the date of inauguration to 2027, so that we get this high-speed rail much earlier. So I think all these iconic projects which are being supported by the government of Japan, Maharashtra has been the biggest beneficiary. In Maharashtra, we understand that India aspires, our Prime Minister aspires to make India a 5 trillion economy. And
we understand that to make India $5 trillion economy, Maharashtra has to be the first $1 trillion economy in India. And we are trying for that. We understand that our development will be defined by the speed of travel and speed of data. Because speed of travel will reduce the costs, speed of travel will give us ease of living, and now that India has a great chance to become a player in the global supply chain, we need to have a reduced speed of enhanced speed of travel and reduced travel time. So huge infrastructure projects are being carried out in the state of Maharashtra. We recently started Nagpur-Mumbai Samruddhi Expressway, which is one of its kind expressway, where initially the travel distance from Nagpur to Mumbai was around 14 to 16 hours. Now it will be at the most 8 hours. So I think the travel distance or travel time has been reduced by nearly half, and it has connected Maharashtra's 14 districts to the JNPT port. So the port-led development up till now was available only to the golden triangle of Mumbai MMR region, Pune, and to some extent Nasik, or a little bit to Sambhajinagar, Aurangabad. But now it will be extended to the 14 districts, and that will play a vital role in making India a part of global supply chain. Yesterday and today, while we were talking to a lot of businesses here and to government officials as well, we were given a sense that now the Japanese companies are also looking at India in a bigger way to invest, because they feel that the next destination or the next factory of world after China can be India. And that is why I think many Japanese businesses are coming to India. And as rightly mentioned by Honorable Ambassador, that Maharashtra is powerhouse. So I would like to urge the Ambassador, because it is you who will be guiding them. So please guide them to Maharashtra. We'll have a safe landing of all the businesses in Maharashtra. We will handhold and will provide all the assistance so that they prosper and they make our state and country prosper. मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार स्पेस मिशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज चंद्रयान ये लैंड करेगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि 140 करोड़ भारतीयों की दुआ चंद्रयान के पीछे पूरी ताकत से खड़ी है. इसलिए उसको उतरने से कोई रोक नहीं सकता. वो ठीक से लैंड करेगा, ये मेरा विश्वास है. लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश को ट्रांसफॉर्म किया है, आज हम देख सकते हैं कि भारत में वंदे भारत ट्रेन आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी. आप जब भी भारत आए, मेक इट अ पॉइंट दैट यू ट्रैवल इन वंदे भारत ट्रेन. ये वंदे भारत ट्रेन किसी भी डेवलप्ड कंट्री के ट्रेन से कंपेरेबल है या उससे भी अच्छी है. और इसमें स्पीड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इतना कंफर्ट है कि शायद हम लोग धीरे धीरे वंदे भारत ट्रेन के कारण फ्लाइट में उड़ना छोड़ दे. इस प्रकार की व्यवस्था वंदे भारत ट्रेन ने तैयार की है. आज प्रधानमंत्री जी ने देश के 500 रेलवे स्टेशंस, 500 रेलवे स्टेशंस को पूरे तरीके से बदलने का काम शुरू किया है. सून देयर विल बी अ डे कि जब आप लोग भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और यू विल बी कंफ्यूज्ड कि हम रेलवे स्टेशन पर आए या एयरपोर्ट पर आए हैं. इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशंस ये भारत में बनाए जा रहे हैं.
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो या अलग अलग प्रकार से विकास के जो हमारे सोपान है उसके ऊपर आज भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मेरा ये विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है उससे भी आगे उनके नेतृत्व में हम लोग जाएंगे और इस सारी हमारी यात्रा में आप सभी लोग जो जापान में रहते हैं या हमारा इंडियन डायस्पोरा दुनिया में जहां भी रहता है, आप सभी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप सब लोग हमारे एम्बेसडर साहब तो है ही, वो तो हमारे प्रमुख है, लेकिन आप सबके व्यवहार से, आप सबके विश्वास से, आप सबके कंडक्ट से, आप सबके यश से, सक्सेस से भारत के यशस्विता को भी नापा जाता है। इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भारत पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें जैसे आप लोग वैसे हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र ये हमेशा ये सारी यात्रा की अगुवाई करेगा, इतना ही विश्वास मैं आपको देता हूं। और आज फिर एक बार आई मस्ट मेंशन, मैं कोयासान यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर डॉक्टरेट दिया है। कोयासान यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत खुशी है कि 2015 में भी जब मैं आया था उस समय हम लोगों ने वहाँ पर हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक स्टैचू हमने प्रेजेंट किया था और उसका अनवीलिंग हमने उस समय वहाँ पर किया था। और इस बार जाकर फिर एक बार उस स्टैचू के दर्शन भी लेने का मौका मुझे मिला और उन्होंने मुझे जो डॉक्टरेट दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो शायद मेरे लिए नहीं है, तो महाराष्ट्र में जो कार्य हुआ है उसके लिए वो दी गई है और इसलिए वो महाराष्ट्र की जनता को मैं आज डेडिकेट करता हूं। और फिर एक बार आप सभी ने यहां पर जिस जोश के साथ स्वागत किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।